स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं और फिर हमने ये भी देखा कि आर्गुमेंट्स के टाइप क्या हैं। इवन वी हैव सीन द वेरिएबल्स कि किस तरीके से हम उनको ग्लोबल और लोकल स्कोप में यूटिलाइज करते हैं ना। नाउ इट्स अ टाइम टू सी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट आर यूज्ड इन द पाइथन, है ना। सो लेट वी स्टार्ट प्रैक्टिकली। तो टाइप्स ऑफ, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम पाइथन में यूज करने वाले हैं। उनमें से कुछ के नाम जो हैं देखिए। लेट लेट वन इज द रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन, also called the lambda function, the function. Then we will check for filter, app, and reduce function. Also check for the various programs that how to use these functions for that. So first we talk about the recursive function, है ना? So what do you mean by the recursive function? Function call itself, and a function call itself is known as recursive function. When a function call itself is a recursive function. तो कैसे फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे हम कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। जो अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में या प्रीवियस वीडियो में एक फंक्शन बनाया है कि वी वांट टू राइट अ फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल। सपोज वी वांट टू राइट वन फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। अब उस फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे, है ना। सो सपोज वी डिफाइन वन फंक्शन फैक्ट, suppose we are passing one argument that is the n, so that is your data, है ना। अब इस n पर हमें फैक्टोरियल निकालना है, फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल निकालना। तो एक तरीका तो वही है कि हम लूपिंग के थ्रू करें। Another way is we can call the fact function inside the fact function to have a final value of your factorial। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, हम चेक करते हैं इफ n इज इक्वल टू जीरो है हमारा, तो क्या करते हैं एक रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं जिसको हम क्या असाइन करते हैं वन, बिकॉज वी नो द फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू वन हियर। नाउ यदि ये सिचुएशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज सिंपली वी नीड टू कॉल द रिजल्ट is equal to into the factorial of n minus 1। So this process will be continue till the time we are not reaching to the zero value। तो जब हम n की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रिजल्ट हमें क्या करेगा, वन देगा। कंटिन्यूअसली ये जो हमारे पास है मल्टीपल होता जाएगा। इन द लास्ट हमें क्या करना है हमारे प्रोग्राम में, जस्ट वी विल बी रिटर्निंग द रिजल्ट। लेट वी रन दिस कोड, देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। सपोज प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ 4, ये हम फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल कर रहे हैं तो किस तरीके से आएगा। फॉर दैट वी हैव टू कॉल द फैक्ट फंक्शन, जस्ट अ मिनट। Inside this we will be calling the 4 only। Run this code, can you see the output is 24। Let me check for the fact 5, the output is that is 120। So recursively we have called this factorial function inside this function with the n minus 1। This approach is known as a recursion, है ना, and the function is known as the recursive function। When we talk another kind of function in a Python, that is a anonymous function।
or we call a lambda function. इस एनोनिमस फंक्शन और लैम्डा फंक्शन जो है, इसको करने के पहले हम एक एक और रिकर्सिव एप्लीकेशन को, रिकर्सिव फंक्शन की एप्लीकेशन को देखना चाहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है व्हिच इज आस्क्ड इन द गूगल कोड जैम। So we need to write a function, write a program to flat a nested list, है ना? And hint is also given there that you need to use the recursion, है ना? This is what the test keys input. So this is a 1 2 3 4 5 6. So particularly if I talk this input case, यहाँ तो एक limited input है, लेकिन हमारे पास किस लेवल की नेस्टिंग है लिस्ट की, we don't know. सो दिस इज द जनरलाइज काइंड ऑफ केस, वी कैन नॉट यूज द लूप कि भाई मैं हर किसी को एक्सेस करूं, चेक करूं, मैं लिस्ट है और लिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर लूं। सो समहाउ व्हेन वी डू नॉट हैव द लिमिट ऑफ दिस लेवल ऑफ नेस्टिंग, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्सन का यूज करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द गूगल कोड जैम एग्जामिनेशन। सो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक आउटपुट वेरिएबल लेता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या कर रहा है आपका, दैट रिमूव नेस्टिंग, रिमूव नेस्टिंग। इस तरीके से करेंगे, यदि रिमूव नेस्टिंग करना है हमें, तो हम एक लिस्ट पास करेंगे जो यूजर के थ्रू मिलने वाली है हमारे लिए, है ना? व्हाट वी विल डू, सिंपली मुझे क्या लिखना है कि फॉर आई इन एल, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, वी नीड टू चेक द टाइप ऑफ दैट एलिमेंट, है ना? इफ ऑफ आई, if type of I is equal to a list, यदि इस टाइप जो हम चेक करते हैं उसका वो लिस्ट आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कॉल दिस रिमूव नेस्टिंग फंक्शन अगेन। what I need to pass, simply we will be passing the I because I is again the list, है ना? तो हमें हमें लिस्ट को ही फ्लैट करना है, कंप्लीट लिस्ट को फ्लैट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रिमूव नेस्टिंग को कॉल करना पड़ेगा। एंड फाइनली what I will do here, else what I do, just simply I need to append I in a output list। तो ये जो है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम लुक्स लाइक, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट यूजिंग द रिकर्सन। तो हमने इसमें रिकर्सन का यूज करा और फाइनली हम फिर क्या करते हैं, जस्ट वी पास, जस्ट वी टेक अ रिमूव नेस्टिंग फंक्शन, inside this remove nesting function, suppose we pass this list, okay? When I print the output, that is a global variable right now, when I run this code, so can you see the output is 1 2 3 4 5 6 7 8 9? So this is very important application regarding this Google Code Gem program, that the output is the non-flatted list which is containing all the elements that was recursively available in the list. Now we move for another kind of function, that is anonymous function or lambda function। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, हम anonymous और lambda function की क्या है कि कभी कभी क्या होता है, वी वांट टू यूज अ फंक्शन इंस्टेंटली, इट्स अ काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला आपसे, एक नंबर लो उसका ट्वाइस एक्स करके दे दीजिए, है ना? टेक वन नंबर एंड ऐड इन समथिंग, है ना? और उसको एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस हम उसको एक फंक्शन के फॉर्म में बनाना चाहते हैं और हमारे उस प्रोग्राम के कोड में हम उसको यूज करना चाहते हैं, है ना? तो इस एक्टिविटी को करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर टू गिव अ पर्टिकुलर नेम एंड द स्टोरेज एरिया कि हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हैं, हम इंस्टेंटली डिफाइन कर रहे हैं और उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। तो उस कोड को हम अनोनिमस फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम उसको नेम नहीं देना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, आप देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है जिस जो केवल स्क्वायर कैलकुलेट करने का काम करता है एक वैल्यू का, है ना? सो व्हेन आई पास दिस n एंड रिटर्न टू n, I pass the square n and return n into n.
can you see this? This function is just returning the square. If I write this function in this way, can you see this is looking a one line statement just to define a square n function. So in a Python, we are having one facility by which you can do this thing in a single line. Like this facility is nothing, we call a lambda function. So for that, we have to use the lambda keyword, and with this keyword, we will be passing the argument list. So suppose the argument list, we are passing data n, and over that argument list, what we need to do, or we are passing the data there, and what we need to do, I just returning the n square. Instead of having this function, this limited or small utility without giving any particular name, I'm just using the variable. Can you see when I pass print x4, we are having 16. So it means that the similar activity is done by this statement. This x is nothing, it's a lambda function. So now definitely this question come in your mind that how will you say this this is actually the function, है ना? तो यदि मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ स्क्वायर, this is a class function. Let me check for the type of x. This is the class function, है ना? तो lambda function में और इस function में कोई difference नहीं है, but it's giving you the way to write in a single line statement. It's giving you the way to make code more reusable and precise. It means very simple code is there to write in a single line statement. Fine. देखिए एक चीज और देखते हैं हम कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं आपके लिए और फिर लैम्डा की फॉर्म में लिखता हूं. लेट आई डू दिस. सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन एड एक्स कॉमा वाई, और यदि मैं इसमें लिखता हूं रिटर्न x प्लस वाई. फाइन. Typically for this addition, if I define one function that is a lambda function, that is a lambda, here I am passing x comma y, two arguments, and finally expression is what? X plus y. Now we have seen the kind of basically I'm just changing the name here, add one here, lambda. So both of these are functions. Can we see at the assembly level the things are same? So let me import one module. We will discuss about the module in the detail in the upcoming videos. So one use a disassembly module is here. When I call this dot this, and we check the assembly level code of this. So can you see there are the 4 instructions here? Similarly, I write this code and check for add one. See the similar kind of instructions are here. So at the assembly level, both the things are same. At the function level and class type of the function are same. So both are doing same kind of activity. But when you write the lambda function, it's more readable and it's more comfortable to write. Let me do some questions to define write the lambda function. Suppose we want to write lambda function to find the biggest of given values. तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा गिवन वैल्यूज में से, है ना? तो बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा गिवन वैल्यूज में से, वो हम किस तरीके से करेंगे? हम एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं सपोज एस, और इसमें जो लैम्डा फंक्शन है इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे क्योंकि हमें बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करना है. तो दैट इज योर ए कॉमा बी कोलन. हम क्या करेंगे? वी विल राइट a one line statement if a, the output should be a if a is greater than b. आपको मैंने if else construct बताया था. Else output should be what? b. So for these arguments this expression will be working. So when I pass this s2 comma 4, or when I run this code,
So can you see the output is 4? So similarly, the things that can be written in the multiple lines of the function has been written in a single line of a statement. So this code is more readable and even performing the same activity of the function. One more important thing about the lambda function, uh, sometimes we pass the function as argument to the function. तो जब भी हमें फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास करना है, इट मीन्स कोई एक फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं और जो ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन के फॉर्म में स्टोर्ड है, उस फंक्शनैलिटी को हम हमारे दूसरे फंक्शन में यूज कर रहे हैं। यदि वो फंक्शनैलिटी छोटी है और यूटिलिटी के टाइप में है, तो हम सेम एक्टिविटी हमारे लैम्डा फंक्शन से भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम और भी टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो वी मूव फॉर अनदर काइंड ऑफ फंक्शन टाइप, दैट इज अ फिल्टर फंक्शन। Basically, what is filter function? So the filter function to filter the values, the sequence, वो sequence जो है हमारा, it can be list, it can be tuple, it can be string any, based on some condition. Now, what is the important point here? How to define this condition? How to define this condition? So this condition can be achieved by using a function or by using lambda function. Let me check one program here to understand this thing. Suppose we want to define one function and we want to filter out the even elements from the list, है ना, एक sequence. So let me try to do the same thing with the help of filter function and the normal function and the filter function and the lambda function. सबसे पहले नंबर filter function का हम syntax समझते हैं क्या है. So the filter function is a function which take a function as a first argument and it takes the sequence another argument. What does it mean? Function में जो हमारा function है, this function can be a normal function or can be lambda function, and your sequence can be key, list, tuple or string. So any container data type or any collection that I will see, it can be the sequence. So let me try to implement this scenario. You know, let I define one function that is a even function, or I will say the is even. आपको चेक करना है इस फंक्शन के थ्रू कि if x mod 2 is equal to 0, what I will do, I will return true. यदि जो नंबर है आपका वो इवन है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, वहां पर ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करूंगा। और यदि वो जो फंक्शन हमारा नंबर हमारा इवन नहीं है तो व्हाट आई विल रिटर्न, सिंपली आई विल रिटर्न द फॉल्स। This function is to check the given data is even or not. Now let me take one list is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now I want to use the filter function to check the given, to filter out the even numbers from this list. So what I will do, I will call the filter function. It will take, as per its prototype, it will take a function or lambda function. So right now we are implementing with the help of function only. So I will take the function name here. That is a
is even, है ना? It should be very clear. We are not calling function here. We are just giving its identifier, है ना? And what I will pass the list. Now, very important thing. Can you see the output? Yes. It has done a filtration of the sequence data with the help of is even function, and that filter value is stored over this particular memory location. तो यदि मुझे इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं ना कहीं इस फिल्टर वैल्यू को हमारे डेटा में लेके आना पड़ेगा, and that data will be converted to the list. And suppose when I do the L1 here, print L1. So can you see this? With the help of filter function as well as already defined function is even function, we could be able to achieve a filtration of the sequence, है ना? हमने केवल even numbers values जो है हमारे पास achieve कर ली, है ना? Let I take this code here, and instead of doing all these activity, can I use the lambda functions here, lambda function only here? So what I will do, let I write one lambda function here, lambda x colon x mod 2 is equal to 0. ये lambda function क्या कर रहा है? इसमें suppose मैंने s is equal to define कर दिया. What this lambda function is doing? It takes the x value, and if this is what the situation, if it is true, it is just giving you the output, है ना? So what I'm doing, instead of this, I am passing this lambda function here, s. I'm passing this lambda function here. So when I run this code, can you see the same output here, 24680? For this, it means that the same activity that has been performed in these number of lines is performed only these number of lines. Instead of this, can I do in a single line statement? So let I take this code here, and instead of writing this complete here, I can do like this also. So I can have this lambda expression inside this function. When I run this code, so you are having the same output. So can you see this? This could be possible in the 2-line code only. So lambda function is more readable, and it's making your code simple and performing the same activity like a function, है ना? So under this types of function, we have discussed about basically recursive function. And then we have discussed about the anonymous function. इस anonymous function में हमने lambda function के बारे में बात करी. फिर हमने जो आपको filter function देखा, है ना? Now we see two more important functions are here. That is our map function and reduce function. Now we talk about the map function. देखिए, आपने फिल्टर फंक्शन के बारे में देखा. फिल्टर फंक्शन क्या करता है? वैल्यूज के डेटा को फिल्टर आउट कर देता है. लेकिन मैप फंक्शन क्या करता है? इफ वी वांट टू मैप सम फंक्शनैलिटी, है ना, इफ यू वांट टू मैप सम फंक्शनैलिटी ऑन द सीक्वेंस, ऑन द डेटा ऑफ सीक्वेंस, then we use map function. Okay, तो सपोज मैं मैपर फंक्शन का यूज करके किसी फंक्शनैलिटी को मैप करना चाहता हूँ, है ना? अब वो फंक्शनैलिटी क्या है हमारी? सपोज मैं एक लिस्ट लेता हूँ. मैं लिस्ट, यही लिस्ट ले लेते हैं हम. This should be 10 instead of 0. And now if I take a function, let I'm defining one function, let I double the value, है ना? I take x and simply I return I return 2 into x. Then n is equal to, I want to map this over this. So like a filter function, the syntax is similar here. I will take the function inside this map. I will take the identifier of this function, that is double, comma, what is my sequence? That is L.
like filter, we have to map it into the list again. When I print L1, you see the same output is there. So we have used the filter function as well as the mapper function here to get the required output by mapping the functionality over the sequence. अच्छा एक बहुत क्लियर है, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, है ना? वी हैव सीन, लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मैपर फंक्शन, एंड दैट बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उसी तरीके से मैक्सिमम आपको मिलेगा इनपुट लेने का तरीका, है ना? सो व्हाट आई विल डू, मैं यूजर के डेटा को जो मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड या स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज है उनको यूज करना चाहता हूं मैं, और कंप्लीटली उसको अपने लिस्ट में यूज करना चाहता हूं। तो हमने उसके लिए क्या करा था, पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करा था, है ना? लेट मी चेक दैट हाउ टू यूज द मैप फंक्शन हियर, है ना? तो सपोज मैंने यूजर से एक इनपुट डेटा लिया है, सपोज द इनपुट, एंड हियर आई एम राइटिंग द डेटा, एंड व्हेन यू विल स्प्लिट दिस डेटा on the basis of the space, it will be returning you to the uh, string values. But what is my objective? I want to find the integer values instead of to find out the integer values instead of these string values. So what I will do, I will simply take a map function. ये map function क्या करेगा? Integer is also a kind of typecasting integer function. So this will map the integer function over this splitted sequence. When I convert this sequence into this list, pass here L is equal to this one. So when I print, let I access individual element, it should be string, but now it's map, it should be int now. For I in L, simply I will type a print of type of I. When I run this code, suppose I'm passing 1, 2, 3, 4, 5, and when I run this code, so can you see that every data has been converted into the int? So this is what the another way where you can take a multiple inputs at the same time by using the mapper function, क्योंकि ये integer की functionality को उसके ऊपर मैप कर रहा है ना? यदि मुझे comma separated values चाहिए होती हैं यहाँ पर, तो what I need to change only, I will be writing comma, and at the time of the input, this is what the output. Can you see the int? The every value has been separated outward the comma, and we are having this mapper function to take the input as well. Now we see the reduce function. रिड्यूस फंक्शन का यूज क्या है? मैपर फंक्शन मैप करता है, फिल्टर फंक्शन फिल्टर आउट करता है। रिड्यूस फंक्शन एक सीक्वेंस को जो है आपके, उसको यूज करके उस पर एक करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लगाता है, और उस करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन से आपको कंसोलिडेटेड आउटपुट देता है। व्हाट डज इट मीन? लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगी हमें, दिस रिड्यूस फंक्शन इज अवेलेबल अंडर वन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज द फंक टूल। मॉड्यूल क्या होता है हमने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिड्यूस फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है हमें, और हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव एक्सेस इट, देन फॉर द रिजल्ट व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल डू द रिड्यूस, और जस्ट लाइक अ मैप एंड फिल्टर फंक्शन, इट टेक द फंक्शन एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट एंड इट टेक द सीक्वेंस। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास द लैम्डा फंक्शन, है ना? हम लैम्डा फंक्शन मैप में भी पास कर सकते थे। यहाँ पर जो मैं डबल का केस लिया हुआ है, दैट वी विल सी हियर। पहले मैं रिड्यूस के बारे में बात करता हूं। तो मैं यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, सपोज लैम्डा एक्स कोमा वाई। हम हर दो वैल्यूज को उठाएंगे उस डेटा की, और उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को हम ऐड कर देंगे। देन आई विल डू, यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, दैट इज अंडर द सपोज रेंज, और ये रेंज है हमारा 1 से लेके 15 तक की रेंज। फाइन। सो व्हेन आई प्रिंट रिजल्ट, see the output 105. So what is happening here? इसने
सारे 1 से लेके 15 तक के सीक्वेंस की दो वैल्यूज को उठाया, उनको ऐड करता गया कंटिन्यूअसली और फाइनली आपको रिडक्टेड वैल्यू जो है आपके रिजल्ट के फॉर्म में आपको प्रिंट करके दे दिया उसने, है ना? सो सिमिलरली वन मोर थिंग इज नीड टू डिस्कस्ड हियर कि हम जो फंक्शन को यहाँ पर यूज करा था डबल में, यदि मैं सेम एक्टिविटी करना चाहता हूँ मैप में विद द हेल्प ऑफ lambda function, I can do this. What I need to do here, just remove this function, pass here the lambda equation. What is this lambda equation? Is nothing, it's a x colon 2 into x. When I run this code, can you see the same output here? So this is what the importance of the functions, you know? In the types of function, mapper function, reduce functions and filter functions are very much useful. And for various coding platforms, it is very much important concepts. So it's all from my side for this video. Thank you for watching.